Good morning, teachers and my dear friends. Today I will talk about one incident that had happened with our first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, in his childhood days. One day, Pandit Jawaharlal Nehru found two fountain pens from his father's office. It was lying on the table. He was greedy to take one, and then one fountain pen from the table was missing. Later on, when the searching and investigation in held, he got caught. In his eyes of everyone's his fault came into account. He was punished and got a huge thrashing from his father. He was very much scared of his father, but he had been respect his father for his dashing personality and good well-being. He was very much fond of his mother, who was kind-hearted and religious lady, who gave him impassioned support, tender and care. Thank you. Respected teachers and my dear friend, I, Master Bhavya Jain from 6th standard of Don Bosco High School, am honored to perform an act of speech given by Chacha Nehru in 1947. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall resume our pledge, not only or in full measure, but substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rare in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation, long suppressed, find utterance. It is fitting that this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still a larger cause of humanity. Thank you. सुप्रभात, मैं जयान खान छठी कक्षा और डॉन बॉस्को हाई स्कूल मटुंगा से आज आपके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो चलो शुरू करें। आजादी के लड़ाई के प्रमुख नागरिकों में से एक रहे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आज हम बात करेंगे। आधुनिक भारत के शिवकाल के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्यार करते थे और उतना ही प्यार उन्हें बच्चों से मिलता था और इसीलिए उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने शुरू से ही विचार था कि उनके पुत्र नेहरू को उच्च शिक्षा दी जाए और यही कारण था कि उनको विश्व की सबसे प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ाया गया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से पूरी की और अपनी कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में पूरी की और उन्होंने अपने लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल वैदिक किए। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत वापस लौटे और उन्होंने वकालत की शुरुआत की। उनका ध्यान भी स्वतंत्रता संग्राम की तरफ गया। महात्मा गांधी के चल रहे गतिविधियों में उनकी रुचि बढ़ गई। 1919 में वह महात्मा गांधी के साथ हो लिए। राजनीति में उनकी असली दिशा 1919 में शुरू हुई, जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए। जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने अपनी पश्चिमी कपड़े और महंगी संपत्ति को त्याग कर दिया और खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनना शुरू किया। सन 1920 से सन 1922 के असहयोग के आंदोलन में हिस्सा लिया और इसके दौरान वह पहली बार गिरफ्तार हुए। सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का मुखिया चुना गया। 26 जनवरी को रवि नदी के पास
किनारे पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए इंग्लैंड के झंडे हटाकर देश का तिरंगा लहराया। 1942 में उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उठाया और डाल दिया गया। उन्हें अल्मोड़ा फेडरल जेल में डाल दिया गया। यह भी कहा। नमस्ते, मेरा नाम मेहुल सचिन कोचरेकर। मैं कक्षा 6ठी में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है डॉन बॉस्को हाई स्कूल माटुंगा। आज बाल दिन के शुभ अवसर पर मैं जवाहरलाल नेहरू के बचपन की घटना के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। पापा पापा, क्या हुआ जवाहरलाल? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? पापा, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेलने जा सकता हूँ? हाँ बेटा, पर जल्दी से घर पर आना और अच्छे से खेलना। हाँ पापा। कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ जवाहरलाल, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम गेम से खेलते हैं। हाँ, गेम से ही खेलते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए कि गेम से खेले ही नहीं है हम दोनों। हाँ, इसीलिए ही आज गेम से खेलेंगे। हाँ चलो खेलते हैं। पकड़ो। वाह, मैंने पकड़ ली। तुम पकड़ो। वाह, मैंने भी पकड़ ली। पकड़ो फिर से। मैंने भी पकड़ ली। अब देख जवाहरलाल, ऐसी गेंद फेंकूंगा कि तुम पकड़ ही नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है, फेंक दो गेंद। पकड़ लेना बराबर से। पकड़ो। अरे अरे अरे, तूने तो गेंद गड्ढे में गिरा दी। अरे बाप रे, अब हम क्या करेंगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक मिनट, मैं मेरे हाथ से निकालता हूँ। अरे निकल ही नहीं रहता है। ये गेंद तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे पास एक तरकीब है। कौन सी जवाहरलाल? हम एक पानी की बाल्टी लेकर आएंगे और इसमें डाल देंगे, और जो पानी का प्रभाव है वो गेंद सह नहीं सकती, तो गेंद जल्दी से ऊपर आएगी। हाँ ठीक है, ये तो बहुत आसान है ये तरकीब। तो चलो मैं बाल्टी लेके आता हूँ। मैंने इसमें पानी डाला। अरे वाह, गेंद आ गई ऊपर। मैंने कहा था ना। चलो मैं गेंद लेता हूँ और ये बाल्टी रखता हूँ। चलो खेलते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी समझदारी से ये गेंद निकाली, वैसे ही हम अपने जीवन में समझदार रहना चाहिए। धन्यवाद। Hello everyone, I am Dhairya Savla, Standard 6, Division B, age 9, age 10, Don Bosco High School. Today we will talk about a legend. And first of all, I am Motilal Nehru. Today we will talk about a legend. He was the first Prime Minister of independent India, none other than Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of independent India. He was very close to children. He loved children. That is why on his birthday it is celebrated as Children's Day. He was sweetly known as Chacha Nehru. Chacha Nehru did many things for our country. His mother was an activist and his father was a lawyer and also a freedom fighter. He belonged from a Kashmiri Brahmin family. He completed his studies from home tutor and then went to Harrow School. He was also a member of Indian National Congress. He did many things for our country. Like an incident, in India, some Indians were harassed and
attacked by the British police. So Jawaharlal Nehru asked a special protection for them by the Indian police. So when the British government got the news of it, they caught him and kept him for 5 months of prison. He also got the lathi charge. He had the support of us. That is why he was successful in bringing independence to India. Like, I want to say something. Prime ministers play a big role in the development of our country. Like Narendra Modi and Jawaharlal Nehru did. A salute to them. Anyone cannot do something for their country. This is wrong. Anyone can do anything for their country. Like the soldiers. They give up their lives for our country. And now the doctors. A salute to all of them. But Happy Children's Day! नमस्कार, मेरा नाम समर्थ विशाल अमूप है। मैं कक्षा 6वीं में डॉन बॉस्को हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। आज बाल दिन के अवसर पर मैं आपको चाचा नेहरू के लाइफ में घटी हुई एक घटना बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। पापा, मैं स्कूल से आ गया। अरे वाह बेटे, तुम आ गए। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है। किधर है पापा, किधर है तोहफा? ये देखो, मैंने एक तोता लाया है। वाह पापा, मस्त तोता है। ये मिट्टू 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 मिट्टू। पापा, पर इसके लिए तो पिंजरा ही नहीं है। रुको, मैं रामलाल से कह के इसके लिए पिंजरा मंगवाता हूँ। रामलाल, ए रामलाल। जी सब क्या हुआ? इसके लिए एक पिंजरा लेके आओ। हाँ साहब, मैं इसके लिए पिंजरा लेके आता हूँ। ये वाला पिंजरा ठीक रहेगा। साहब, मैं इसके लिए पिंजरा लेके आया। अच्छा पिंजरा है साहब, मैं इसको पिंजरे में रख देता हूँ। हाँ जवाहरलाल, बेटा जवाहरलाल। हाँ पापा, क्या हुआ? ये देखो, हमने तोते के लिए एक नया पिंजरा मंगवाया है। वाह, मस्त पिंजरा है। ये मिट्टू मिट्टू अमृत खाएगा। ये ले अमृत, अमृत खा अमृत। ये ले मिर्ची खा। मैं रुक, तेरे लिए पानी लाता हूँ। बेटा, बहुत रात हो गई है, जाओ जाके सो जाओ। हाँ पापा, मैं जाके सो जाता हूँ। आज मैं स्कूल जाता हूँ और जल्दी घर आके इसके साथ खेलता हूँ। बाय पापा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं घर जाते समय मेरे सारे दोस्तों को बताऊंगा। ये रुको श्याम, क्या हुआ जवाहरलाल? क्यों इतनी देर रुका के रखा है? अरे मेरे पापा ने ना एक तोता लाया है, तुम सब कल उसके देखने आओ। हाँ हाँ हाँ, हम देखने आएंगे। ये दोस्तों सुनो, जवाहरलाल के पापा ने ना एक तोता लेके आए हैं, उसे हम कल देखने जाएंगे। अरे क्या करूँ अभी हम तोता से खेलते हैं। अरे ये तोता क्यों इतना चिल्ला रहा है? अरे ये सांप ने क्या किया? तोते को पिंजरे से निकाल दिया, तोता उड़ गया। मैं बड़े सांप को कहता हूँ, बड़े सांप बड़े सांप। क्या हुआ रामलाल, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? सांप, छोटे सांप ने ना तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और तोता उड़ गया। क्या? रुको, मैं अभी जवाहरलाल को बुलाता हूँ। जवाहरलाल, जवाहरलाल। हाँ पापा, क्या हुआ? ये रामलाल सही कह रहा है कि तुमने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और तोता उड़ गया। हाँ पापा, यहाँ देश में सब लोग स्वातंत्र्य के लिए लड़ रहे, तो हम उस बेचारे तोते को क्यों पिंजरे में रखे? इसीलिए मैंने भी उसको बाहर निकाल दिया। बड़े नेक विचार है बच्चे तुम्हारे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। धन्यवाद।
My name is Ethan Pates. I study in 6th standard. I go to Don Bosco High School, Matunga. Our school's UID is 27230209209. I am saying a character of Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He was born on 14th November 1889 in Allahabad. He pursued his higher studies in law in England. He played an important role in the struggle for freedom of India. His daughter, Ms. Indira Gandhi, was the first Prime Minister of our country. Nehru was deeply in trouble by the harsh treatment of the Britishers to his fellow Indians. So he joined the non-cooperation movement of Mahatma Gandhi. He also went to jail several times for flouting the rules of the Britishers. India gained freedom in 1947 and Nehruji became the first Prime Minister of our country. Under his guidance, India progressed and made many changes in the fields like economical, agricultural and social policies. He believed that educating the youth is vital for our country's future growth. He opened many institutes for educating the children. He also included free and compulsory education for all children. He also arranged the best modern equipment for our country. He was extremely fond of the children and loved them very much. The children used to fondly address him as Chacha Nehru. This is because of his love for the children that his birthday is celebrated as Children's Day. Nehruji emphasized the importance of giving love and affection to the children and to encourage the welfare of the children all over our country. Thank you. Jawaharlal Nehru was born on 14th November 1889 in Allahabad. His father's name was Motilal Nehru, who was a good lawyer. His father was very rich, because of which Nehru got the best education. At an early age, he was sent abroad for studies. He studied in two universities of England, namely Harrow and Cambridge. He completed his degree in the year 1910. Since Nehru was an average guy in his studies, he was not much interested in law. He had an interest in politics. Though he later became a lawyer and practiced law in Allahabad High Court. At the age of 24, he got married to Kamala Devi. They gave birth to a daughter who was named Indira. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He was a man of great vision. He was a leader, politician and writer too. Jawaharlal Nehru was a man of peace, but he saw how Britishers treated Indians, due to which he decided to join the freedom movement. He had a love for his country, because of which he shook hands with Mahatma Gandhi. As a result, he joined the non-cooperation movement of Mahatma Gandhi. In his freedom struggle, he had to face many challenges. He even went to jail many times. However, his love for the country did not get any less. He fought a great fight, which results in independence. India got its independence on 15th August 1947. Because of Jawaharlal Nehru's efforts, he was elected as the first Prime Minister of India. Nehru was a man of modern thinking. He always wanted to make India a more modern and civilized country. There was a difference between the thinking of Gandhi and Nehru. Gandhi and Nehru had different attitudes towards civilization. While Gandhi wanted an ancient India, Nehru was of modern India. He always wanted India to go forward
in a forward direction, despite the cultural and religious differences in India. Thank you. Hi, my name is Natyachatta from Don Bosco High School, Matunga, Standard 6, Division D. Today, I would like to do a mono act on Children's Day special. Hey Yash, do you know what day is it today? It's Saturday. No Yash, I meant which day do we celebrate today? I don't know. Can you tell me? Oh, we celebrate Children's Day. How can you forget that, Yash? Oh, sorry. I can't believe I forgot Children's Day. Okay, what else do we celebrate today? Sarthak, why are you asking me so many questions? Because teachers say that you learn something when you're curious to learn about it. Okay. Can you just give me a clue? Okay. We celebrate the birth anniversary of the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. Isn't he the person that kids love and his birthday is celebrated as Children's Day also? Yes. Jawaharlal Nehru loves kids a lot and he also wants to celebrate this special day with the children of the entire nation. And did you know he is addressed as Chacha Nehru? Oh yes, I remember. Chacha Nehru and Mahatma Gandhi fought for the freedom of India. Yes. Today, teachers also guide us the same way Gandhiji used to guide Chacha and Nehru. Sarthak, how do you get so many information? I read the documentaries of Indian leaders. And today I'm planning to watch the first speech of the first Prime Minister of the India. Would you like to come with me? Oh, of course. Why not? Standard 6, Don Bosco High School, Matunga. I, Jawaharlal Nehru, widely known as Chacha Nehru, was born on 14 November 1889 in Allahabad, son of Motilal Nehru and Swarup Rani Nehru. My birth anniversary is celebrated as Children's Day in the country as a tribute to my contribution towards building the nation. Until the age of 16, I was educated at home by a series of English tutors. Also had an Indian tutor who taught me Hindi and Sanskrit. In 1905, I went to Harrow, a leading school, where I stayed for 2 years. My academic career was in no way outstanding. From Harrow, I went to Trinity College, Cambridge, where I spent 3 years earning an honours degree in natural science. On leaving Cambridge, I qualified as a barrister.